क्या आपके नीज़ में अभी प्रॉब्लम है एंड आपके डॉक्टर ने आपको नी सर्जरी रेकमेंड करी है? क्या आप एक प्रोफेशनल हैं जो लैपटॉप पे घंटों बैठे रहते हैं एंड आपकी शोल्डर पेन, नेक पेन एंड बैक पेन कॉमन इश्यूज़ हैं? या आप एक एथलीट हैं जो जेनेटिक्स को बीट करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं? वेल, देयर इज़ अ वे. We have an expert here today on Apprisers Podcast, which that will guide us as well as you about techniques, how we can do that, and what diet to follow, what everything to do, and you'll be good to go. So, Tanvir bhaiya, welcome to the show. Thank you, Vandit. So, how are बताओ. you? मैं बढ़िया, आप बताओ. How you been? एकदम बढ़िया. Thank you for having me here. It's a pleasure. मैंने आपके बारे में बहुत सुना है. Through my friends, through the people you have trained so far, I've heard a lot about you. So it's a pleasure. Cliche, but I hope all good things, huh? Yeah, सही है. it's a pleasure. सही है. It's a pleasure. Thanks. brother. So, how did you start your journey of Kromako, and what kind of patients do you deal with on a daily basis? So Kromako was born when I moved back here from the States after my basketball journey. I practiced a few years in the States as well. Came back here, wanted to bring the same concepts I learned over there, been around the top sports scientists, coaches, athletes in the world from NBA, NFL, NHL, so that category of people. And I wanted to bring those concepts here. Through my journey, I figured out what works best and what doesn't work best. Every time I went to a place, people claimed that a certain thing only worked with a certain process. But मैंने सारी चीज़ें, I put everything together, and over this journey, I figured out what's working in terms of performance. So hence, Kromako was born a couple years ago, about 6-7 years ago, when I moved back here, with the concept of helping athletes and helping people in pain with the right information. Because trust me, the right information is hardly available. Okay, so you just mentioned you have played several, sports. You have particularly basketball at a very high level, which the audiences, they don't have a clue. I mean, I didn't play several sports. I had been around people from those fraternity in terms of coaches and sports scientists and strength coaches. But I was closely associated with basketball, and I'm still Yeah, am. for the baller audience who's watching this podcast right now, he has played D1 basketball, NCAA D1 Division 1, which is a very, very big thing. And just tell us how that happened. Where did you play exactly? And what led to your transition from basketball to helping out athletes? So I'll correct you here, right? Because I know people are now going to go and Google and see if I'm saying the correct thing. But I didn't play D1 basketball. I was involved in D1 practices. I had a walk-on spot with one of the coaches I knew at Gonzaga, which I didn't take. And I followed up with some D2 ball, some D3 ball, some NAIA ball. And then I ended up playing professionally in Germany in Regionalliga, Oberliga, and Bundesliga. And I happened to be the first Indian who played in Europe, and this was back in 2006, 2007, where there was no drills available on Yes. Instagram or on YouTube. So that was the basketball journey. So how did that transition from basketball to helping out athletes? So Through Kromako. essentially, when I left for the States, I had this dream of playing basketball at a higher level. There was no contacts, there was no NBA school, and I wanted to go there, and just the whole concept was knocking on as many doors through emails, calls, and physically. As many doors as possible to have a wide pool of people who know me, so I get a better opportunity of at least entering a team and then trying my luck there. And that was the basketball journey. So then what led you to transition for helping athletes over? Why did you come back? I came back because I essentially went for a business course, but when I had people helping me with this stuff that I'm doing right now, it kind of intrigued me, and I was learning through the process.
And then I officially thought of, pursuing it, officially. And then I went through BSc, kinesiology school, chiropractor school, and wanted to bring that information back here. और इंडिया में एथलीट्स को हेल्प करें उस चीज़ के साथ. तो ऐसे इस चीज़ में इंटरेस्ट बना. बट जब गया था तब तो ऐसा था कि बस जाना है बास्केटबॉल खेलने के लिए और कोई भी कोर्स हो जो सबसे इजी हो वो कर लेंगे, जैसे यहाँ पे करते हैं सब. बट वहाँ जाके इसमें इंटरेस्ट बना. स्कूल में मेरे पास साइंस नहीं थी कभी, है ना. बट अब मैं अपनी जगह को नर्ड हाउस बोलता हूँ. मेरे को फिजिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है. Let's talk about kinesiology for a moment right here. For the audience who's watching this, what's the difference between kinesiology and a normal physiotherapy? So physiotherapy is basically more essence toward exercise and very less modalities in machinery or handheld modalities or hand driven modalities. Kinesiology, if you are dealing with a kinesiologist, you have one set of eyes that are looking at you through an angle of a strength and conditioning coach, a physiotherapist, a chiropractor, an engineer, also somebody who knows biomechanics, somebody who knows nutrition, psychology, hormones, all of this stuff from one set of eyes. So then we find the best possible solution. You could have somebody come in and they want to jump 5 inches higher. I might want to fix something in their brain here, and automatically they're jumping 3 inches higher in 2 weeks without going through the squat. So this is what a kinesiologist does. It's a very creative field. It's an evolving field. We bring in a lot of different concepts from different industries and then try to incorporate it in human performance, which means athletes wanting to run faster, jump higher, somebody on a desk job, they don't want to hurt their back while they're working. या उनको ऐसा लग रहा है कि वो they're falling sleepy on their desk. I have had patients in age between the age of 35-40 जिनके बच्चे हैं और वो स्पोर्ट खेल रहे हैं और उनके एल्बो में दर्द हो रही है, बट वो बच्चे को पकड़ के खेल नहीं पा रहे. They cannot hold their child. So if I fix their pain, it's raising their performance measures. Yeah. So this is what it entails. Okay, and so typically this can help a lot of people with different problems, catering to athletes, catering to common professionals who are working on the desk, and maybe patients which have severe knee problems, back problems, neck problems, as we discussed right now. Yeah. Any age group, doesn't matter. Any age group. I work with kids. I work with special needs people. I work with 60-year-olds who've been told to replace their knees, back pain, athletes, everyone. How is that possible that if a doctor has told a patient that you need a knee surgery, how can you cure that without even doing a surgery or medication or something like that? See here, यहाँ पे होता क्या है कि doctors or orthopedics, it's a certain process. Nobody is doing a wrong thing. Orthopedic has been trained to look at an X-ray or an MRI and say, hey, this is bad and we need to fix this. Maybe not surgically, but now you go to a physiotherapist, or it's a certain prescription that this is what a physiotherapist will do. However, physiotherapy is so dynamic. I always say that you can probably do a surgery over a video call, but not physiotherapy. Because surgery is done in a particular way of a particular thing, right? There are obviously dynamics, and I'm not trying to relate surgery to physiotherapy, but this is how it's taken care of. But it can be done. It's possible. It's possible, and it's case by case studies, and we take a no medicine approach, no surgery approach, and bring in a lot of different modalities that I have accumulated over the years and made my own concepts. And I think so far we have been blessed, and the results speak. So talking about results, you have worked with athletes on a very close level, as well as patients which come to you on a daily basis, right? So can you give me an example where a patient with severe injury and was diagnosed to have a surgery by a doctor, and you helped him out, and what kind of a process was that, and what kind of a results, and how long did it take
to achieve those results? Starting from how you analyze the problem to fixing it and then getting results. So the approach I usually take, especially with pain management, usually I always say this, it works 10 times faster than any other modality. But I'll talk to you about, you know, the longest case that I've had, which has been 4 to 5 months. And in general physiotherapy, 4 to 5 months is pretty usual. And this is the longest I've had, and it was with a patient who had bariatric surgery. She was really heavy, and she beat cancer as well. And she was in a lot of pain. She was given stress medication, anxiety medication. She was told she will not be able to walk. She had nerve problems, etc. Fast forward today, 4 months. She is able to walk. She danced at a wedding where she sent me the video the same night she danced. And we are still in the process, but we have defied all odds. And again, just without getting too technical, just different modalities and spending time with the patient. I don't see 50 people in a day. I probably see 3-4 people, 5 people in a day. And I call them personally. I figure out what's going on with them. And I always say this with my athletes also. We don't do personal training. We mentor everything, We mentor our athletes. We mentor our patients. And when they come in, it's like a project. We work on it together to find a solution. And solution has always been found. That's great. And athletes के साथ क्या होता है? Athletes का main जो most common problem रहता है वो runners knee रहता है, right? So वो होता क्या है and होता क्यों है? Is it a disease or is it a maybe? Normally foot से related होता है. Okay. With modern day shoes and socks, our feet gets too narrow. And if I was to move my big toe, I can feel it right in my pelvis. And this is and it tells you how everything is connected. And my pelvis is flawed, which stabilizes my lower back, then my lower back hurts. So it's just digging in deep. And और बताओ? Runners knee में actually लोग क्या सोचते हैं मेरा knee खत्म हो गया है, right? डॉक्टर्स के पास जाओगे बोलोगे एक्सरे करवा लो, एंड उसके बाद वो मेडिकल चलता रहेगा कि भाई ये एक्सरसाइज करो वो एक्सरसाइज करो. आई हैव बीन थ्रू इट. तो इसलिए पेन के इतने रीजंस हो सकते हैं ना. मतलब अगर आप 6 महीने भी लगे रहोगे ना तो आपको सारे रीजंस कभी नहीं पता लगेंगे. How you're sleeping, how you're moving, what's happened in your life in the past 5 years. Understand pain happens from here, If somebody is beating you up and you are in excruciating pain and I pull out your spinal cord right in front of you, right? And you will feel no pain. So understand how it's related to the CNS, your afferent neurons and your afferent neurons. उससे communication होता है. और जो knee pain, जो jumpers knee और runners knee की आप बात कर रहे हो, वो normally foot से start होता है from wrong biomechanics. And the idea is to fix those biomechanics. और चलने का ढंग, दौड़ने का ढंग, आपको स्क्वाट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना. आपको एक एंड गोल रीच करना है, बट वो सारी चीज़ें फॉलो होती नहीं है. जंप करना है तो जंप करते रहो और स्क्वाट करना है तो स्क्वाट करते रहो. It's not dug in deep, and all of this requires time. If they were to tell you that 1 hour of workout will actually hurt you, then get you better, then who will end up in the gym? Right. ऐसा बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है. जो एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई वाज वन ऑफ देम जब मैं खेलता था. सो टॉकिंग उनकी तरफ से, हम लोग अंधे होके प्रोग्राम्स खरीदते हैं, जंप प्रोग्राम्स में मेरे को स्पीड इंक्रीज करनी है भागने के लिए, तो मेरे को ये एक्सरसाइजेस करनी है, एंड अंधे की तरह जाके लग जाते हैं करने के लिए. काम करता है, कुछ टाइम के लिए करता है, न्यू स्टिमुलस, हाँ, करेगा, लेकिन उसके बाद इंजरीज हम देखते हैं कि आनी शुरू होती है धीरे धीरे. अच्छा, मेरा राइट एंकल दर्द कर रहा है,
उसको ट्रीट करा नहीं, क्योंकि आई थॉट स्ट्रेचिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे खेलने से पहले. तो ऐसा करना चाहिए. व्हाट्स रॉन्ग विद दिस अप्रोच? आई थिंक रॉन्ग तो क्या ही बोल सकते हैं, बिकॉज जो जैसे अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ नॉट अवेलेबल टू एवरीवन. बट आई थिंक mobility is important. Just keep fixing the imbalances. That's the easiest route. Don't think heavy. Think fast and speed. Think neuromuscular. Push everything fast. तो ये आई थिंक ये अप्रोच होनी चाहिए. अब अगर हमारे पास कोई आता है, तो आप अगर लेग वर्कआउट के लिए आए हैं, बहुत एक रफ हम प्लान करते हैं. वी नेवर राइट वर्कआउट्स डाउन. आप कैसे सोए हैं, गाड़ी में कैसे आए हैं, उससे भी मैं वर्कआउट चेंज कर सकता हूँ, है ना. वी स्टार्ट विद वन एक्सरसाइज, वी डिग इनटू समथिंग एल्स, एंड देन सडनली यू से माय ग्रॉइन इज हर्टिंग, एंड देन वी डू समथिंग एल्स. इट्स लाइक opening up a car and fixing something and doing some iterations for 2 hours and getting a better product out of it, है ना. We might do chiropractic adjustments right before we lift, because I might not want to have you lifting on a bad ankle, But if you now lift it on a bad ankle, which in a regular gym people will not be able to see, then is that really helping you? Is running on a treadmill really helping you? Because on a treadmill you can never attain the right running form. Right running form is running on the spot, leaning, and जैसे हम कभी अपना पैर में पैर फंस जाता है ना और गिरते हैं, we catch ourselves. That's how running should be, that effortless. So वो तो कभी ट्रेडमिल में अटेन होता ही नहीं है, और उस पर बेल्ट को कैच करते रहते हैं, और फिटनेस के नाम पे घुटने पे एक एक करके वो चोट लगती रहती है. अंडरस्टैंड दिस, द बॉडी इज रियली सोफिस्टिकेटेड. उसकी चोट 15 साल के बाद आएगी. अच्छा. फिर कोई नहीं बता पाएगा कि क्यों दर्द हो रही है अब. फिर आप एक्सरे कराते रहो और बोलो यहाँ पे खराब है, यहाँ पे खराब है, यहाँ पे खराब है. उससे नहीं होगा. वो तो एक्सरे MRI तो आपको यही बता रहा है कि आपकी 25 साल उम्र है, तो आपकी 25 साल पुरानी हो गई है पीठ. खराब तो होनी है ना. गाड़ी में भी तो बोलते हैं कि 3000 किलोमीटर के बाद फिल्टर चेंज करा लो. हमें बोलते हैं जब दर्द होगा तब दिखाना. गाड़ी में वाले तो नहीं बोलते खड़खड़ जब करेगी तब दिखाना, है ना. तो उसको पहले दिखाना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम आज के ज़माने में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके लिए बॉडी बनी नहीं है, और अगर बनी है तो उसके लिए अभी हमारे पास उस टाइप का खाना नहीं है, उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं है ना. तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली. तो एक एथलीट अगर लेट्स टॉक अबाउट बास्केटबॉल फॉर अ सेकंड, राइट. लेट्स चेंज द टॉपिक फॉर टू बास्केटबॉलर्स राइट नाउ. ठीक है. बास्केटबॉलर्स का मेन मोटिव क्या होता है? चलो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग तो करनी है, ठीक है. उसके बाद क्या मोस्ट गूगल पे सर्च टर्म जो होता है ना, मैं जंप कैसे बढ़ा लूं. सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग जो उनको करना चाहिए बिफोर गूगलिंग इट कि जंप कैसे बढ़ाऊं? बास्केटबॉलर्स घुसते ही कि भाई बास्केटबॉल खेलना चालू करना है, इस टीम में घुसना है, स्टेट में घुसना है, नेशनल में करना है, इंडिया टीम में घुसना है, जंप बढ़ा लेते हैं. सो ठीक है, जंप बढ़ाना है, तुमने सोच लिया, लेकिन डायरेक्टली जिम में घुस के प्लायोस करने से, स्क्वाटिंग करने से, डेडलिफ्ट मारने से पहले सबसे चीज़ क्या करनी चाहिए उनको? सबसे पहले बायोमैकेनिक्स चेक होनी चाहिए, एंड हाउ देयर CNS इज परफॉर्मिंग. व्हाट इज CNS? इट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके. We can measure and tell you if today you had a leg workout, but your CNS can only accept you learning something, or today your CNS can only accept you sprinting. We can deduce that as well. So the idea is not to go through like this n number of sessions and hurt yourself, but get really intricate and get the same results in little time. हमारे यहाँ पे 10-20 किलो बेंच पे डालना 4 हफ्ते में कोई बड़ी बात नहीं है. साल लग जाता है, और तब भी नहीं डलती है ना. 100 किलो पे बेंच पे लोग फंस जाते हैं जिम में, है ना. फिर वो कभी ऊपर जाते ही नहीं है ना. तो अप्रोच चेंजेस ज़रूरी हैं, और इस अप्रोच चेंजेस से जिम में स्टेरॉइड्स भी कम होंगे, क्योंकि लोगों की और स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी और मस्कुलर बढ़ रहा होगा. वो रुक जाते हैं एक जगह आके. अब उसके बाद उनको लगता है कि इसके आगे कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में और लिफ्टिंग में इसके आगे कोई साइंस नहीं है, अब स्टेरॉइड लगाओ. सो जंप की एक्सरसाइज करने से पहले उनको CNS प्लस अपने बायोमैकेनिक्स चेक होने चाहिए. सो बायोमैकेनिक्स में जहाँ तक मसल सिमेट्री चेक होनी चाहिए.
अच्छा, ओके, है ना. जैसे आपको आइडियली होना चाहिए आप वैसे हो या नहीं हाँ. हो, कहीं इम्बैलेंसेस तो कहीं नहीं इम्बैलेंस नहीं है, उसको वीक बोल दिया जाता है ना. फिजियोथेरेपी में बोलते हैं कि आपके नी में पेन हो रहा है तो आपके क्वाड वीक है. कैसे? किसी ने कुछ मेजर करा है कि क्वाड वीक है, ये स्ट्रांग है और ये वीक है, ये कैसे हो जाएगा? यूजुअली नी प्रॉब्लम्स के लिए भी लोग बोल देते हैं ठीक है ऊपर की मसल्स है नीचे की मसल्स तो वीक हो सकती है, तो तुम उसको स्ट्रेंथनिंग कर लो, वहां लोड कम पड़ेगा तो ठीक वीक हो नहीं है, जाएगा। वो फंक्शन नहीं कर रहा, वो पूरा फंक्शन करेगा तब पता लगेगा ना ये वीक है या स्ट्रांग है. तो बेसिकली पहले ये सब चेक हो जाना चाहिए, पहले सब ये सब चेक हो जाना चाहिए, उसके बाद और ये फ्रीक्वेंटली चेक होना चाहिए ताकि आपके पास एक मोबिलिटी और रिकवरी का एक प्लान रहे, कुछ एक स्पेसिफिक प्लान रहे आपके पास एक्टिवेशन का कि क्या आपका नी अंदर केव करता है, आप उसको मेंटेन करके रखो. मैं हमेशा कहता हूँ कि एथलीट्स को जितने ज़्यादा वो हेल्दी हैं उतने अनहेल्दी भी मतलब हैं, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू इंजरी, बिकॉज दे क्रिएट दीज इम्बैलेंसेज. यू नो, राइट से ही बॉलिंग कर रहे हैं पूरे साल तो लेफ्ट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है. अब जाके ऑफ सीजन में दोबारा स्ट्रेंथन नहीं करने लग जाना, उसको बैलेंसिंग करना है पहले. तब वापस जो अंदर की पुरानी स्ट्रेंथ थी वो वापस उभर के आएगी. आप उसी में लग जाओ, जंप नहीं बढ़ रही, स्क्वाट करते जाओ. इस एंगल से कभी कोई सोचता नहीं है, पता है, लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जेनेटिक है, मैं कर नहीं पा रहा, या तो मेरे में वीकनेस है, मैं इतना क्विक नहीं हूँ, मैं हो भी नहीं पाऊंगा. तो एथलीट्स के लिए क्या एक एडवाइस रहेगी जिससे वो जंप बढ़ा पाएंगे एक्चुअली, या एक रूटीन बता सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमने अभी डिस्कस किया कि स्टार्टिंग में पहले बायोमैकेनिक्स टेस्ट होने चाहिए, CNS टेस्ट होना चाहिए, getting all those results as positive, you're good to go. Now what's the next step to improving jump? तो आई थिंक because just to add to it, starting में आपने बताया था कि 5 इंच जंप इंक्रीज करनी है, विद इन अ फ्यू वीक्स यहाँ पर कुछ चेंज करके यू आर एबल टू गेट दोज रिजल्ट्स. 5 वीक्स में आई डोंट थिंक कि लिफ्टिंग करी होगी तो इंक्रीज हुआ होगा, समथिंग एल्स मस्ट हैव बीन डन, राइट? टॉक अस थ्रू दैट. सो CNS को आई थिंक फायर करने के लिए वी हैव टू गेट इन अ जोन ऑफ फ्लो. You know, so I always talk about my basketball athletes doing break dancing for a specific purpose, and then doing a traditional dance for a specific purpose, or a bhangra for a specific purpose, to develop that flow. So you are a little flowy and twitchy. आप मजदूरों को देखिए, वो जिम में आके वेट नहीं उठा सकते हैं, है ना, पतले होते हैं बिल्कुल, है ना, बट उनका फैशियल स्ट्रक्चर इतना स्प्रिंगी और इतना इफेक्टिव होता है कि बिफोर द मसल ट्विचेस दे आर जस्ट सो रिफ्लेक्सिव, दे आर मूविंग थ्रू हम्प्स विद अनइवन लोड्स, है ना. तो वो बनाने के लिए पहले तो आई थिंक सम काइंड ऑफ डांसेस, इनकॉर्पोरेटिंग सम काइंड ऑफ डांसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिससे क्विक रिजल्ट्स आ सकते हैं. इट कैन मेक यू काम इन योर बास्केटबॉल, आपको फ्लो आएगा अपनी मूव्स में, उससे जो कोर्ट पे नहीं अटेन हो सकता बार बार मूव करके, है ना. कोई वहाँ खड़े होके आपको हर पॉइंट पे नहीं बता सकता कि ये रॉन्ग रैप है, एंड रॉन्ग रैप्स से बेटर है नो रैप्स, है ना. तो एक तो वो फ्लो इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थिंक यू शुड एम फॉर योर वर्कआउट कि आप वर्कआउट के बाद और लूज फील करें, है ना. अपने एक्सरसाइज के बीच में स्ट्रेचिंग इनकॉर्पोरेट करें इन बिटवीन एवरी सेट ऑफ एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग. अब इन सब चीज़ों के बड़े स्पेसिफिक पर्पसेस हैं. ये ऑब्वियसली मैं दोबारा कहूँगा कि जनरली सबके लिए नहीं है, बट आपने कुछ पूछा कि बताओ, तो मैं बता रहा हूँ. इसलिए मैं कोई ऑनलाइन प्रोग्राम्स वगैरह नहीं बनाता, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, ये सबके लिए बहुत अलग अलग हो सकता है. बट दिस इज़ द रूल ऑफ थंब. एक्टिवेशन और मोबिलिटी दूर की बात है, उससे पहले आप जस्ट ट्राई टू लिफ्ट वेट्स फास्ट, है ना. यूज बैंड्स विद योर स्क्वाट्स. होता क्या है कि अगर आप 100 किलो लिफ्ट कर रहे हो, दैट स्ट्रेंथ इज एट द वीकेस्ट पॉइंट, है ना. नीचे से फुल स्क्वाट में आप 100 kgs कर पा रहे हो, अगर मैं आपको पार्शियल बोलूँगा तो आप वो 150 कर लोगे, है ना. तो हवा में वेट कैसे चेंज होगा. तो आप हर एंगल पे स्ट्रेंथ नहीं गेन कर रहे हैं. जहां आपको टॉप लेवल पे स्ट्रेंथ गेन करनी है जंप के लिए, 0.2 मिली सेकेंड्स में जंप आ रही है, वो स्ट्रेंथ गेन कैसे होगा,
है ना. जब तक आप 150 नीचे से ऊपर पहुंचोगे वो पार्शियल स्क्वाट 200 हो जाएगा. राइट. है ना. तो इसलिए हम लोग कुछ एक आइसोकिनेटिक रोबोट यूज करते हैं. वी यूज बैंड्स, जिससे हम लगेज स्केल से बैंड की टेंशन टॉप पे चेक करते हैं और नीचे चेक करते हैं, और हमें पता है कि वो बैंड अकोमोडेटिंग रेजिस्टेंस देगा. ऊपर जाते जाते वो टेंशन बढ़ती जाएगी, एंड फिर नीचे आते हुए इसेंट्रिक में हमें थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मिलेगा. एज फास्टर आई गो डाउन द हायर आई विल कम अप. है ना. दूसरी चीज आप ये सोचिए, जब आप स्क्वाट करते हो इनिशियल एक्सेलरेशन होती है ना, बट आपको कहीं ना कहीं रुकना है. आपको पता नहीं लगता, बट आपको डिसेलरेट करना पड़ता है. करेक्ट. ऊपर लेके तो कूद नहीं जाओगे. तो बैंड आपको टॉप एंड तक एक्सेलरेशन करने के लिए देता है, क्योंकि वो सपोर्ट करता है ऊपर तक. तो चेन्स यूज कर सकते हैं, वेट रिलीजेस हम यूज करते हैं. वी पुट आउट अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट दैट ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल. सो उसमें ये सब दिख सकता है. What about home remedies or maybe home exercises which can be done to improve weights? क्या ये myth है कि home calisthenics की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है टॉपिक में कि कैलिस्थेनिक्स और जिम ट्रेनिंग में कैलिस्थेनिक विंस एवरी टाइम. मोस्टली मैंने ये सुना है. इज इट अ मिथ और मे बी इट कैन बी डन? मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लिया है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोचेस के अराउंड रहा हूँ, और अलग अलग जो भी अपना कोर्स बनाता है वो बोलता है कैंसर से लेके पैर दर्द तक सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं. और यही मेरी अप्रोच रही है कि मैंने फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आई हैव पिक्ड अप bits and pieces, and over the 15 years I've accumulated that. अगर आप स्कूल में बोलेंगे तो स्कूल में हमें सब कुछ ये सिखाया नहीं जाता. With experience you build your own analogies, and the positive attitude clicks everything together, and good things happen. कुछ not everything is by the book. You improvise in this field, and multiple things work together. सिर्फ एक्यूप्रेशर से बैक पेन ठीक नहीं होगा, सिर्फ फिजियोथेरेपी से नहीं होगा, सिर्फ 50 लाख की मशीन से नहीं होगा. सब मशीन दिखा के करते हैं, पर मशीन का काम नहीं है. जिम भी मशीन दिखा के करता है. मैंने इतना बड़ा स्पोर्ट्स साइंस का सेंटर लगाया, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगी. अगर किसी को ये चलाना आता है जो आपको हेल्प कर रहा है, तो बहुत टाइप की इम्प्रूवमेंट हो सकती है, एक सिर्फ स्क्वाट ट्रैक में भी. काफ़ी इंट्रीगिंग आई गेस डोमेन है आपका. क्रमाको में आप जेनेटिक्स को भी बीट कर सकते हो. क्रमाको में इस टाइप की ट्रेनिंग की जाती है जिससे आप जेनेटिकली जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, उससे ऊपर निकल सकते हो. सो गिव मी एन एग्जांपल दैट व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट कैन नॉट बी डन. बिकॉज कई लोग सोचते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि किसी भी टाइप का नी का प्रॉब्लम्स ठीक हो सकता है क्या. यू लाइक कि इट कैन बी डन. थोड़ा सा पहले एनालिसिस करना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक कि 100% हो जाएगा. सो जस्ट गिव मी अ डिफरेंस कि मेरा आज तक सक्सेस रेट 100% रहा है विद गॉड्स ग्रेस. वाओ. मैं सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करता हूँ, नॉट इन अ स्पेसिफिक गॉड, बट कुछ उस वजह से मेरे को ये लगता है कि मेरे वो क्लिनिक वाले रूम में कुछ और ही एंटर करता है, और कुछ और ही होता है, और कुछ और ही चलता है ना. आप अक्षय की बात कर रहे थे. अब लिगामेंट में मैं सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. लिगामेंट का स्टैंडर्ड है कि लिगामेंट में ब्लड नहीं जाता, एंडोथेलियम प्रोडक्शन उसमें नहीं होती है, उसके लिए सर्जरी चाहिए ही होगी. हमने तो बगैर खोले कर दिया उसको. तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, बट यस एवेल्युएट करना पड़ता है. मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट हाँ MRI और एक्सरे में भी चेंजेस आएंगे जो मैं करता हूँ थोड़ा टाइम बाद, जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाएगा. एंड डाइट्स की अगर बात करें एथलीट्स के लिए हो सकता है, लेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, डाइट फॉर एथलीट्स एंड डाइट फॉर कॉमन पीपल. ठीक है, जिनको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना, लिटिल बिट थोड़ा सा मूवमेंट है उनका दिन में, एंड स्पेसिफिक टू एथलीट्स. सो व्हाट्स द डिफरेंस कि वो कई लोग क्या होता है ना, मेजरली कॉमन पीपल में स्टोन का प्रॉब्लम होगा तो वो प्रोटीन्स लेस लेते हैं. और इंडियन डाइट के हिसाब से अगर बात करें तो कार्ब्स मैक्सिमम डाइट में कार्ब्स होते हैं. आलू खा लो, रोटी खा लो, यही चलता है पूरे दिन. एंड एक एथलीट के लिए दोनों तरफ से बात करके मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट दे शुड हैव एंड व्हाट दे शुड नॉट हैव. बिकॉज बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं, लोग पिज्ज़ा खा के भी बॉडी बना रहे हैं. आई यूज्ड टू लोड अप ऑन 12 donuts
3 times a week to cross my weight plateau that I was stuck on. I was stuck on 87, 88, and I wanted to play at 92, 93. I was a bully on a court and a pest on defense. And I had a ratchet. I was shooting deep threes before Steph Curry was shooting deep threes. Steph Curry, are you listening? Are you listening? बेंच पे बिठाते थे उसके लिए. बहुत दूर से फेंक देता था यार. मेरे को उस टाइम भी ये इंट्रीग ऐसे रहता था कि यार 3 पॉइंट ऐसा कब कोई आदमी आएगा कि वो हाफ कोर्ट से 2 स्टेप आगे लेगा और फेंक देगा. वहां पे तो कोई डिफेंस नहीं कर रहा. हाँ. और 4 में से 10 चलेगी तो जीत गए. हाँ, है ना. तो अब हो रहा है वो स्टेफ करी कर रहा है. क्रेजी. हाँ, बहुत क्रेजी है वो. अरे वो भी जेनेटिक है या लाइक क्या है वो? बिकॉज ही इज 1 in a million जो ऐसा कर सकता है. I think he's a rhythm genius. He has the rhythm on lock. You know, बॉल तो आंखें बंद करके भी जाती है, कई बारी टेढ़ी फेंक के भी जाती है. हाँ, है ना. बिल्कुल. आज ही मार के आया मैं. he's a rhythm genius. And Kyrie Irving is also another rhythm genius. You know how their foot matches the bounce of the ball. You know. तो कमिंग बैक, सॉरी, हम लोग ना थोड़ा सा बास्केटबॉल है ना तो हो जाता है. मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन. कमिंग बैक टू you ask a question and then I start answering and then I lose the track. Okay, coming back to, you're discussing diets for 2 different set of people. One is the athlete set of group, and other are the common people who are working professionals and wants to stay fit. What is your recommendation and what to eat and what not to eat in the entire day? Let's talk about the common people first. I think मैं दोनों के लिए सेम ही कहूँगा. I'll recommend the same kind of process for both people. Maybe the quantity changes and the ratio of the carbs and the fat and the protein changes. I always say that the Indian diet is the most wholesome, provided you get the right ingredients. You know, your mustard oil is actually mustard oil, and it's not some 100 rupees liter mustard oil, which, you know, the seeds probably cost more than needed to make that 1 liter mustard oil. The ghee is the right kind of ghee. The atta is indigenous and not a made up crop, right? And your veggies, if possible, your veggies are organic or natural, you know, or just naturally done and not mass, you know. इन सब चीज़ों के लिए पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने पड़ते. इन कॉन्ट्री बिलीव के इसमें खर्चने पड़े. आपकी हाउस हेल्प है, उसको बोलिए घर से लेके आए अपने गांव से, उसको पैसे दीजिए. है ना. अपने घर से घी बना के लेके आए गांव से. उससे तो बहुत बेटर होगा ना. एक बोरी भर के वहां से आटा लेके आए, चावल लेके आए, धान लेके आए वहां से. है ना. तो जो स्टेपल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. राइट. एंड देयर इज नथिंग मोर होलसम यार. हल्दी, कलर वाली हल्दी नहीं, गाँव से हल्दी मंगवाओ. है ना. ऑर्गेनिक ब्रांड की नहीं खरीदनी है, गांव से मंगवाओ. अपने आसपास देखो. तो उसके लिए थोड़ा सर्च करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. राइट. है ना. तो if you could attain that, you could attain, you know, great heights in your health, you know, contrary to the belief that you need to have olive oil. Olive oil is promoted because EU nation has invested millions of euros on promoting olive oil. You know, our ghee is golden. You know, but the right kind of ghee. You know, actually, 500 rupees a kg is not ghee. You know, you need, if you talk about our desi cows, you probably need 25 liters to 30 liters of milk to make 1 kg of butter. Agreed. है ना. तो आई थिंक उसमें 1500 to 1500 के आसपास तो सिर्फ मिल्क की कॉस्ट है. हाँ, किसी ने ना ऑनलाइन ऐसे ही स्टैट्स डाले थे. पतंजलि का जो घी आता है, राइट, इतनी तो काउज ही नहीं है जितना वो घी सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में. तो ऑब्वियसली मिलावट है उसके अंदर. सो द राइट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, द रेशियो चेंजेस. आई ऑलवेज सजेस्ट डाइट्स विद अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट यू कैन हैव एंड सम थिंग्स दैट यू शुड नॉट हैव. And what and are then those, play with it. What are those you should not have?
The wrong kind of ingredients. Sugar. Avoid sugar totally. Avoid sugar totally. Why? Because sugar is slow death, brother. Huh. Even if it's brown sugar, even if it's good. The body will only, understand a specific kind of sugar only to a certain extent. After that, sugar becomes only sugar and it'll raise your insulin. Even if it's good. Even if it's good. ये नहीं Not पता था. to say you eliminate everything, but understand that if you're an athlete, then sugar is probably not a right thing in the name of carbs even after post-workout, And that goes for a common person also. I think that could eliminate a lot of health problems. Sugar. Sugar and having a little wholesome sattvic kind of diet. I think most of the population needs just that, because in the past week you've had chola bhaturas and you've had coke and all of this, and then suddenly for 1 week you ease out your system. No non-vegetarian, right kind of ghee, mustard oil, right dhan, ragi, jawar, sabji. इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तांबे के बर्तन में पानी, बस ओके. खाओ. अब मेरे पास कुछ खुश और रहो. भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हाँ, इसको पूछो ना. सुन के, बिकॉज अच्छा ठीक है, लेट्स किल दैट क्वेश्चन. वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉर एन एथलीट, व्हिच वन? I think early in your career, non-vegetarian. Okay. Late in your career, vegetarian. Why so? I think vegetarian, essentially when you're building muscle and you're going through the nuisances of the sport and 3 practices a day, day and night you're running. I think some red meat and some pork, that lard on the pork, that fat, really helps with your neurotransmitters. It really helps with sustained energy. So it very much helps with your dopamine. I spoke about neurotransmitters, and you need that. And you cannot get just enough protein from those plants. है ना? You just can't. When is that time जब ट्रांजिशन करना चाहिए वेजिटेरियन में? लेट इन योर करियर यू सेड. When your body tells you you're getting old, when you need that extra ice bath after the game, or you need that extra 10 minutes of stretching before your game, or that extra mobility before your game. That's when you need to cut down on your weight that you were essentially playing on. Maybe change your game a little bit. Maybe stop that bumping, grinding game if that's what you position, if that's the position you were playing in. ऐसा है. तो शुरू में नॉन वेजिटेरियन, और ताकि थोड़ा सा चलता रहे बिल्डिंग ब्लॉक्स, and बाद में vegetarian, ease up the system, drop your weight, change your game a little bit, see how you want to move, what works best for your body. That will give you a sustained career. और वर्कआउट्स भी ऐसे ही चेंज होंगे. बट नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है वैसे वो ह्यूमन बॉडी के लिए है नहीं. राइट. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए नहीं बना है. राइट. ओके. बहुत सारी चीज़ें हैं. अब पैलियो डाइट में तो कहते हैं कि एंसेस्ट्रल यही खाते थे, रॉ मीट, जंगल में रॉ मीट खाते थे. तो मैं कोई डाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ. मैं तो सिर्फ इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट वर्क करा और मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज क्या डिड्यूस करती है. अभी इंटरनेट पे ढूंढने जाओगे कि पानी से जीव बनती है और पानी से मरता भी है आदमी, वो भी मिल जाएगा. है ना? मिलेगी सारी चीज गूगल बाबा पे. So you keep using what works best for you. बट ब्लड की जो टॉक्सिसिटी होती है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट बढ़ा देती है. एंड मैं वेजिटेरियन डाइट में भी उसको अगेन द राइट काइंड ऑफ मीट. अगेन द राइट काइंड ऑफ मीट. ओके. है ना? एंड अगेन मैं वेजिटेरियन डाइट में भी उसको थोड़ा सा पॉइंट करूंगा. व्हेन यू सेड घी, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये भी ब्लड की टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं. हम लोग मिल्क ज़्यादा कट करवाते हैं, घी मक्खन हर आदमी से नहीं कट करवाते. कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए आता है तो उनके लिए पूरे डेयरी प्रोडक्ट्स कट कर देते हैं. अगेन केस बाय केस बेसिस. It's also a lot of trial and error when you work with certain people very deeply.
you work as a team and you're finding a solution. Sometimes some things will work and some won't work. None of this is on paper. Yeah. It's very dynamic and very interactive. मेरे दिमाग में ना ऐसे बहुत चाल मच गया अभी क्वेश्चंस का. मतलब अब मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन तो एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, बट फॉर अ कॉमन पर्सन हु वांट्स टू नो व्हाट वर्क्स फॉर मी एंड वेजिटेरियन डाइट में, एंड हाउ डू यू सजेस्ट वो अपने एज के अकॉर्डिंग अपने कार्ब्स, अपने प्रोटीन्स को कैसे मैनेज करे ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी ले विद नो प्रॉब्लम्स. एंड डोंट चार्ज मी फॉर दिस राइट नाउ. नहीं, कोई चार्ज नहीं है यार. कॉमन लोगों इसमें मैं यही बोल सकता हूँ कि अपने फूड को रोटेट करिए, एंड कनेक्ट विद योर बॉडी. When you say rotate करिए मतलब your body gets used to something? No, just to understand. Sometimes that's how you will find your allergies or the process of elimination. Something that's not sitting right in your stomach. Sometimes a lot of lentils, I do one kind of a food quotient test, which gives you, what works for you and what doesn't work for you, and specific to ingredients. And basically, you can do the same thing by trying to eliminate certain things from your diet and seeing what is sitting right with you and what's not. आज आपने कुछ खाया है, 72 घंटे के बाद आपका पेट में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि 3 दिन पहले जो खाया था it's not sit right in your. It could be something as healthy as a broccoli. तो स्टमक एसिड क्या चीज़ आपकी एक्सेप्ट कर रहा है वो चलेगा. और बस. एंड जैसे आजकल तो हर कोई यूट्यूब पे ज्ञान बाबा बन गया है, ठीक है. आई वुड से सच्ची में मैं भी हूँ. यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे ज्ञान बाबा. नहीं, बट एक्चुअली यूट्यूब पे आप मतलब आई हैव सीन माय पेरेंट्स वाचिंग यूट्यूब वीडियोस जहाँ पर हर कोई डाइट के बारे में ज्ञान बांट रहा है. बोलते हैं कि आप ये कर लो, आपके थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. थायराइड के लिए आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये डाइट फॉलो करो. तो उसमें आई हैव सीन people recommending to eat raw fruits, raw food instead of cooked food. So I don't know the science behind it. Can you help me out with it? रॉ फूड खाने के लिए बोल रहे हैं. हाँ, रॉ फूड. आई मीन कुक मत करो, रॉ खाओ जितना खा सकते हो. सुबह की डाइट में सुबह उठते ही आप सबसे पहले फ्रूट्स खा लो, 12 बजे से पहले तक आप अपने फाइबर ले लो, उसके बाद थोड़ा सा आप इनटेक करो जो कर रहे हो. The first thing that happens when you are not cooking your food is you are not cooking out the essentials out of the food. But that brings me to, what are the essentials in today's food? है ना? You are better off washing or boiling that vegetable before eating it raw. But is it right what they're doing or what they're recommending, and people I mean, you can have a follow? mix of things. You can have some cooked and some raw. ये मेरे डैड भी करते हैं. अलोम विलोम करना है तो अब बोला है तो अब 2 घंटे अलोम विलोम कर रहे हैं, है ना. अगर किसी ने बता दिया कि मिलेट्स खाने हैं तो अब मिलेट्स की दाल भी बन रही है, मिलेट्स की खिचड़ी भी बन रही है, मिलेट्स की मिठाई भी बन रही है, सारा मिलेट्स खाने. ऐसे तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी कोई भी चीज़. प्रपोर्शन में खिलाओ. पोर्शन में खिलाओ. रॉ डाइट ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग सम कुक्ड फूड एज वेल. एंड कई बार लगेगा नहीं सूट कर रहा तो स्विच करो. हार्ड एंड फास्ट रूल्स मतलब मैं अपनी को यहाँ पे थॉट रख दूँ विदाउट एनी kind of analysis or some kind of study to back it up. It's I do what's worked best for me, and I impart that knowledge, and I keep updating myself. At Kramaco, everyone can get those kind of knowledge and help that we do courses as well. We work with athletes as well. We work with patients and बैक पेन, नी पेन, जैसे आप लोगों को बोला था पहले. तो कोई भी कर सकता है एंड क्रमाको को रीच आउट कर सकता है. I'll put in the, if you're watching this podcast or listening to this podcast on YouTube, I've put in the his links in the description below. You can check it out. And let's come to a very different
but not widely spoken topic, mental health for athletes. बहुत important है यार. Right. I'll speak about basketball because 15 people in a team, and I think only the 7 are in the right mental health, and the rest 8 in the back of the bench, they are getting banged up here. But I think that's what you need to be ready when you get into a team sport. Let's talk about every sport because अब जैसे आपने मेरे को starting में बताया you worked with golfers, you worked with boxers, basketballers तो आप करते ही हैं, and plus powerlifting की जो Paralympics की team है, you're working with them as well, right? So let's generalize this topic for every athlete. ठीक है. ठीक है, and talk about what mental health, why mental health is important, what kind of mental stress they go through, and what are the ways they can actually manage their mental health. मेंटल हेल्थ इश्यूज एथलीट्स को ज़्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, आई थिंक, एंड वांटिंग टू परफॉर्म बेटर is part of it. Going through practice every day for the rest of the year when you know you're going to be on the end of the bench. No matter what you do next day in the practice, you're still in the end of the bench because that's what's been reduced, and that's the system that's working. That doesn't mean that you're not the right kind of player, but that's not the sport for you. Okay. That's not the sport for you. Maybe in an individual sport would work for you. No, a different team might work for you. Steph Curry might not have been Steph Curry if he would have been in a different team. Maybe. Yeah. Who knows? So it's what's presented to you, what's in front of you, and that's the issue athletes usually face with mental health, especially in a team sport. Have you ever encountered such kind of patients at Kramaku? Certain athletes like that. I mean, I get a bunch of athletes who do have performance issues, and they do play. The law of variability in terms of what's happening in a game in every single second, every single minute. Nothing will ever be the same, so no kind of practice really would bring you up to speed to that. So something has to happen here correctly for you to transfer that practice onto the court. And I always speak about implicit learning. Most of here I'll speak about basketball because I do basketball skills as well. Most of basketball skills training is done in not in an implicit learning form, which means you are told a certain thing and you're supposed to do a certain thing, or you're supposed to enact on it. Implicit learning means you are learning a concept without actually thinking you are learning a concept. So give me an example. An example could be if I am doing dribble moves from the right wing. I have a set types of dribbles. Like one would be crossover. If I speak out one, it's crossover. If I speak out two, it's between the legs. If I speak out three, it's behind the back. And maybe you're chasing a certain cone, or maybe you're chasing a certain defender. And at a certain point, I will command left L321 or R123, and then you match what I said. That's a little bit of implicit learning, but then again, it's still controlled. Then we throw in more variables to take them away from that concept of thinking and doing. Right. Thinking and doing. So to a contrary, won't this happen if someone plays regularly? Because that's implicit learning. That's implicit learning. That is implicit learning. But then how many times are you able to go through a certain variable? You might be doing 100 behind the backs every day for the rest of the year. But if you count every time you did this in the game, you'll probably have it on
You can count it on your fingers probably 10 times. So, you're playing 7 minutes in a game, 10 minutes in a game, but you're going through 3 practices a day. So these are the nuisances of a team sport, and it's not for everyone. It's not for everyone. Very small percentage of high school players actually transfer into college sports, and then obviously very few transfer into professional ranks, and that depends on talent as well. So what kind of issues, what kind of mental issues that an athlete can go through? Like you said, performance issues, Performance anxiety, sitting on the end of the bench and thinking when his turn will come, which probably never is. Wanting to know what's his next move. Is he still keeping his? Is he still eligible to play? If I talk about U.S. sports, is he losing his eligibility? These are the most issues. Sometimes you feel lonely. Sometimes the coaches won't give you the right answer. Everybody's trying to run a system, and everybody's trying to do what's right for them. And what about individual sports? Individual sports, it's good and it's bad, because bad is you're alone, you're lonely. You're lonely. And what about people who are going through it? How can they improve or manage their anxiety? Or maybe, It's a continuing process. You could use sports psychology, you could use meditation. Tai Chi has really worked for me. You can pull up a YouTube video and follow some Tai Chi kind of movement. You can use subliminal messaging. If you're a music head and you listen to music every day, you can have some subliminal messaging recorded behind your music for motivation, for you be able to execute a certain move in a certain way. Visualization works. I call it dreaming before dreaming. So you dream before you sleep, and then you dream. You fall asleep while you're dreaming, and then you dream again about the same thing. about the same thing Yeah, that happens. that you just tried dreaming. What happened for me? I just ठीक है मैं बात कर लेता हूँ उस बारे में. In my second year of college, I was in India only. I had this urge to dunk the ball. Dunk the ball. Yeah, I couldn't get up. Right, I was like this much above the rim. That's all. But then I online Google कर लेते हैं, Google Baba, how to increase my jump. मैंने कर लिया. It worked for me. Yeah, sure. Some worked. Yeah. But what really worked was, overnight I used to dream about dunking. That's a testament, man. I don't hear used too to. many people I'll saying that. tell you very honestly. I'll swear on anyone right now. The day I dunked, the night before it, I got a dream that I am springy enough to go this much high. And That's crazy. yeah, and the next day I was up. Not this much, but I dunked the ball. That is the reason in TBU, in the basketball university, I always say that people always speak about how the game is 80% mental and 20% skill, and nobody really practices it, right? You see skills, and that skills is based on NBA game, where there is only 400 players in the world and only 50 to 100 get to stay every year, and the other 300 move to other ranks. And if you want to really see basketball, watch European basketball or NCAA. So we always focus on the mental aspect in the basketball university and how we train our athletes. I don't think we attain the 80-20, but we really shoot for it. We really shoot for it. That's the whole idea behind it. I've never seen any Indian player train mentally, because they always train physically, even if it's dribbling the ball or. Oh man, I was trying to find every little, corner, every little help, every little tool, every little aid. When I was in the States, trying to be better than the rest, because I was going through 3 practices a day, and my teammate was going through 3 practices a day, and how will I get better than him?
So I put in that extra work. I went through every tool, man. And I think that's what built in my interest in doing this, because I was so up to speed and I was so intrigued by the science. And even people around me there didn't know about all of that stuff, because I used to dig deep in Google Baba and find how I can help, and found different products. And I got interested in engineering through that. And man, just wanted to live the dream. I had those high ups and downs. I lived the best. I was homeless for 8 months. I didn't want to come back. My parents were calling me back. I used to sleep in my car, but the dream still stayed alive, and I'm glad I did it. I had multiple people along the way who told me that I'm living in pipe dreams, but I always say pipe dreams are the best dreams, because then that pipe explodes. When it fills up with dreams. Yeah. It doesn't pass right through. It blows up. So There's a very important topic that we discussed. We started off with mental health, but it led to a very important message that training mentally and visualizing, and I won't say what's the term for it? imagery or visualization. Yeah. So do that before you even start doing the physical training. It will help you. Oh yeah. I mean, with everything. It will get you good quality reps as well. And, who knows? You might not even do that and you're still doing it in the game. Yeah. You won't even practice it, and it still happens in the game. That's what you want. Yeah. That's what So we're digging for. Krumako pe jao, and I'll just say that right now, and get all of this stuff, okay, which we discussed. All happens at Krumako, and thanks a lot, Tanvir, for coming to this podcast today. Thanks, bro. And बहुत कुछ सीखने को मिला. I appreciate it, man. Thank you. मैंने आज first time kinesiology word सुना था, so I didn't even know. When he told me on WhatsApp, I do kinesiology. I was like, what? But, the way he told me and way Krumako helps, hats off, man. This is something new into India right now. I have never seen anyone doing this kind of stuff, this kind of treatments, this kind of a new evolving field, I would say. बस यार लोगों के साथ एम्पैथी रखनी है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना है ना, तब बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, है ना. आपको याद रखना है 1 महीने के बाद भी आपने दूसरे का क्या देखा, क्या करा उसके साथ, है ना. तो फिर those energies really flow, man. They do. That's all then. All Thanks right. a lot. Thanks for a lot. And I'll see you in the next episode. Peace out.